friends, how are you doing today? And thanks for joining me for today's video in which we are going to discuss the sample answer of one of the latest cue card. The cue card is talk about a time when you disagreed with others or you didn't agree to decision made by others. The cues can be whom took the decision, what the decision was, why you disagreed, and what did you do afterwards. बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम किसी के साथ अग्री नहीं करना चाहते क्योंकि हम हमेशा वही काम करेंगे जो हमारे दिल को पसंद है, हमें अच्छा लगे। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है जो हमारी विश के अगेंस्ट हो रहा होता है, उस टाइम हम डिसएग्री कर जाते हैं। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम आइडिया रखेंगे कुछ बहुत ही सिंपल, रियलिस्टिक, जो आप सबको लगे कि इसके बारे में तो वैसे हम बिंदास बोल देंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ हिकअप, और इसी से आपकी फ्लुएंसी डेवलप होती है। यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल रमन आर्ट्स कोचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्रेस कीजिए, दबा दीजिए बेल आइकन एज वेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यूली अपलोडेड वीडियोस, एंड never forget to press the like button if you like my videos, and if you don't like, please press the dislike as well. Now, idea for this cue card. आपने डिसएग्री किया, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है। तो वापस चलते हैं हम उस टाइम पर जब हमने दिए 10th क्लास के एग्जाम। अब 10th क्लास तो हो गई, अब 10+1 10+2 में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप बन जाएं एक डॉक्टर। आपके एक कजन है जो डॉक्टर है, वो चाहते हैं कि आप भी उसके तरह एक डॉक्टर बने। लेकिन उनके सोचने से क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में नहीं है। आप बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, जिसकी वजह से आप मेडिकल साइंस क्यों पढ़े, तो जिसकी वजह से आपने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं माने, दे वर एडमेंट। तो अभी यहां पर आपने क्या किया, आप अपने टीचर के पास गए जिन्होंने आपको पढ़ाया। सिंस योर टीचर इज वेल अवेयर ऑफ योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, आपने उनसे अपने मन की बात की कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और आपने उन्हें रिक्वेस्ट भी किया कि वो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करने में हेल्प करें। आपके टीचर ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने इवनिंग आपके फादर को कॉल किया, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे का इंटरेस्ट होना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू व्हाट पेरेंट्स विश, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने बताया कि जो सब्जेक्ट्स आपका बच्चा सोच रहा है उसमें क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, दैट मींस आगे चल के वो क्या अपॉर्चुनिटीज उसके लिए अवेलेबल रहेंगी। ये सारी बातें जब उन्होंने उन्हें बताई, आपके पेरेंट्स फाइनली एग्री कर गए और वो मान गए कि चलो बेटा, आपको जो सब्जेक्ट्स रखने हैं वो रख लो। अगर आपके साथ भी प्रैक्टिकली ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड दिस इज प्रीटी मच ऑल। इट इज द टाइम जब आपके पेरेंट्स ने कुछ और डिसीजन लिया लेकिन आपने डिसएग्री किया। आइए देखते हैं ऐसे क्यू कार्ड का सैंपल आंसर कैसा होना चाहिए ऑफ अ लेंथ बिटवीन 1 to 2 minutes. Well, it is not practically possible to agree to others' decisions all the time. Let me share one such experience when I disagreed to my parents' decision. I vividly remember after completing 10th, I had to choose a field of study for higher education. At this time, my parents started to force me to opt medical stream. Since one of my cousins is a doctor, so my parents always wanted me to be like him. Frankly speaking, I always wanted to be an engineer than being a doctor. I tried to convince my parents that neither I have interest to study medical science nor there are many future possibilities. However, my parents were adamant and I failed to convince them. So I took help of my class teacher who was well aware of my weaknesses and strengths. At the same time, she knew the potential of non-medical stream. I requested her to help me to change the perception of my parents. Later in the evening, my teacher called my parents and suggested them to let me choose the subjects because students' interest is more important than anything else. Forcing a child may not bring desired results and it gives undue stress. After this conversation, my parents allowed me to take my decision. At this point, I was extremely happy to hear that now my parents are not going to force me to agree to them. And overall, it was a time when I disagreed to a decision made by my parents.